दिसतं. BSc ला सेमिस्टर बाकी इयर पॅटर्न्स आमच्याकडे. हे सर क्लास वाईज सगळे ग्राफ याचे आम्ही तयार केलेले आहे. आणि सर मराठी साहित्यामध्ये जो विद्यार्थी फर्स्ट येतो कॉलेजमधून त्याला एक सिल्व्हर मेडल आमच्या विभागाकडून दिल्या जातं. गेल्या 5 वर्षामध्ये हे सिल्व्हर मेडल आम्ही दिलं. ये अवार्ड फील्ड यूनिवर्सिटी देते हैं. नहीं, दैट अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय मेरे पिताजी यहाँ थे मराठी के लेक्चरर, उनके नाम से मैंने वो प्राइज मराठी You sponsored the award in the name of your father. आमच्या डिपार्टमेंटचं पब्लिकेशन आहे. मराठी साहित्यावरची सगळी ही पुस्तकं जी आहेत ही पब्लिश झालेली आहे. त्यानंतर सर फॅकल्टी मेंबरच्या अचिव्हमेंट्स म्हणजे विद्यापीठाची बोर्ड ऑफ स्टडी जी असते त्या बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये सायन्स आणि कॉमर्स विभागामध्ये आमचे मेंबर्स आहेत. AC बुलेटिन म्हणून अमरावती विद्यापीठाचं एक बुलेटिन निघतं, त्याची मी स्वतः मेंबर आहे गेल्या 2 वर्षापासून. त्याच्या मीटिंग्स विद्यापीठात होत असतात. अचिव्हमेंट ज्या आहेत विभागातल्या सगळे. सर थोडंसं हँडरायटिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी आमच्या विभागाकडून दरवर्षी एक वर्कशॉप आम्ही घेत असतो. विद्यार्थ्यांचं एक व्यक्तिमत्वाचा भाग आहे उत्कृष्ट हँडरायटिंग, तर त्याच्यासाठी आम्ही हा वर्कशॉप जाणीवपूर्वक या ठिकाणी आयोजित करतो. बेस्ट प्रॅक्टिसेसमध्ये तुम्ही तसं एप्लीकेशन करो. तो हैंडराइटिंग उनका अच्छा था तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और वो भी एक पर्सनैलिटी का भाग करके उन्होंने उसको बहुत ये किया था. संदीप कुमार सावंत के नाम से बहुत रूरल एरिया से आए हैं. उनके ऑटोबायोग्राफी में मैंने पढ़ा था, तो हमने भी ये चालू कर दिया बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए. ये सर एसोसिएशन वर्क है, इसमें से भी हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लेते हैं. रूरल एरिया के बच्चे रहते तो हमको ज़्यादा स्टडी के बाजू में उनका ये सिर्फ बीकॉम में मराठी इंग्लिश नहीं. कोई भी लड़का कोई स्टूडेंट पूरा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में मराठी मीडियम में परीक्षा दे सकता है. मराठी मीडियम में दे सकता है. पूरा दे सकता है. पूरा मराठी इंग्लिश भी है. मीडियम इंग्लिश में चूज कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो मराठी है. कोई इंग्लिश चुन सकता है, कोई मराठी तो फिर उसको इंग्लिश मीडियम लेता है तो एक्सटर्नल करके उसको परीक्षा देना. लैंग्वेजेस आर कंपल्सरी. लैंग्वेजेस मराठी and English are compulsory. जैसे कॉमर्स प्रॉब्लम for science it is no जैसे problem. आर्ट्स Science Science for science English only is- BSc or BSc first year is having a language. After that they don't deal with language, they deal with only scientific subject. I speak about medium, not Medium is English. Medium. Medium is only English for science. For BA, for MA master, for arts degree, you have got both options. Yeah. For arts and commerce we have both options, but for science जो है चारित्र्य निर्मिति, इस पे हम रूरल एरिया के बच्चे तो हम ज़्यादातर आर्ट्स फैकल्टी वाले उसको करते हैं चारित्र्य निर्माण. चलो फिलॉसफी डॉक्टर मी तुम्हाला सांगतो तुमचं जे भाषण आहे हे सरांना समजलं आहे. सर पुण्यामध्ये राहिलेले आहेत. आपले अध्यक्ष साहेब किनी साहेब त्यांना चांगली मराठी समजते, बोलता पण येते. दिस इज सरप्राइज फॉर यू. पुरुषोत्तम वानखेडे, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी. हमारा कॉलेज जो है सर वो 1944 को इस्टेब्लिश हुआ, मगर हमारा सब्जेक्ट जो है फिलोसॉफी वो 49 में स्टार्ट. वेलकम टू नेक्स्ट ईयर डी फैकल्टी प्रोफाइल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लाइफ मेंबर इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस, अखिल भारतीय दर्शन परिषद, महाराष्ट्र फिलोसॉफिकल कांग्रेस, नागपुर टीचर एसोसिएशन. रिसर्च एक्टिविटीज PhD ongoing, संत गाडगेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी. प्रेजेंटेशन 11-12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, 12-13 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, 13-14 ग्राफ फर्स्ट ईयर ग्राफ सेकंड ईयर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, महाराष्ट्र तत्वज्ञान परिषद,
32वां अधिवेशन का आयोजन किया था कॉलेज में। इसका इनागुरल फंक्शन तत्वज्ञान में क्या इंजीनियरिंग दर्शन 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 को तत्वज्ञान में इनागुरल फंक्शन डॉक्टर श्री सुभाष राठी प्रेसिडेंट MS गोटी कॉलेज ये वॉलपेपर इंडियन फिलोसोफर विंडो, ये फिलोसॉफिकल डे 19 नवंबर 2015 का। टीचिंग में एक साथ ओनली वन मिस्टर नरवाड़े नरवाड़े मिलिंद नरवाड़े फिलोसॉफी के लेक्चरर है पुणे में, वाडिया कॉलेज। एक IS मिला इस किसी को, IS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट सर्विस, और अभी MP में है, नहीं MP में गुजरात में है। STA के मतलब क्या? STA जैसे popularizing subject. I understand that philosophy is not liked by many people. There are very little number of students everywhere. Some other departments, other humanity subject that will come from philosophy department. Philosophy is like this. This is the real subject because all subjects are got a philosophical basis. Even mathematics, commerce is got a philosophy. Every subject is got a philosophy. By this way, have you got any class in that way? Your future vision. To attract the students. Yes, to attract the students. I think that should have been one of the points we should have written there. सब्जेक्ट के प्रति मुलांची संख्या वाढण्यासाठी बच्चों की अमरावती यूनिवर्सिटी में हमारा फिलोसॉफी सब्जेक्ट जो है 8-10 कॉलेज की है अमरावती यूनिवर्सिटी में, और उसमें से हमारे कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट है। So very precarious condition. काही प्रयत्न आहे. छोटा तीसरी बात एक खास चीज जो आपने नोट किया, ठीक है, ये छोड़ ये पास में दे रखे Explain increasing every year. किसी भी रिजल्ट आप every year assessment year होगी 2013 16 स्थान 16 स्थान 16 स्थान 16 स्थान डिपार्टमेंट में बता 16-17. है नहीं Yes, 16-17 का क्या है? ये फाइनल ईयर अब देखिए 15-16 में इतना अबाउट 90 सर, अबाउट 90 every year. ठीक है, मगर 16-17 में करंट ईयर का क्या है? चलो है करंट देखा है देखा ना था कोरोना टाइम पर क्योंकि आज की तारीख में तो होता है ना क्या कोरोना टाइम पर ये बात इंग्लिश टॉपर है, आप नागपुर डॉक्टर के बाद जाने हमारा तो इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस हो आपकी ना वो ठीक है सर इकोनॉमिक्स राव सर अभी सिंह सर they are both for BA and BCom or Only BA आप और जीवन के बारे में खास बात एनीथिंग स्पेशल और यू डोंट वांट टू से स्टूडेंट के सेमिनार प्लीज ये छोड़ो आगे थोड़ा जी आगे प्राध्यापक भगत प्रैक्टिकल साइंस सर यूनिवर्सिटी रिजल्ट एनालिसिस है सर 12-13 फर्स्ट ईयर आगे सेकंड ईयर अपने 13-14 14-15 15-16 16-17 हाँ और 16-17 का सर उसमें नहीं है, पास में है करना चाहिए था क्योंकि पास में है सर 16-17 हाँ 20% नहीं सर वो डायरेक्ट फाइनल ईयरचा आहे सर एक 79.48%. चलो परसेंटेज अब क्यों ना आगे बढ़ी 5%. 70 पब्लिकेशन वाली ये सब परसेंटेज हाँ हमारे सेकंड प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस से, उनका है रिसर्च एक्टिविटी का 5 are permanent and 3 are CSB. telling that what number of students are there? Teacher student ratio is okay? Yes sir. Yeah, good. Research projects, 3 research projects are completed by the department after the previous year.
2011. Major No, minor research projects are completed. funded by Pardon, please? Funded by. Funded by UGC. minor. Yes. This is the research project completed by. Yes. These are the research papers. Any conference organized by government department? No, not organized by the department. Overall, 39 research papers are published in seminars, conferences, and workshops. Student registered. One faculty member is the supervisor of English from Gondwana University and some Rashtra Guruji Maharaj University, Nagpur. And presently, one faculty member is being supervised by the This supervisor. organization of PhD guide. Yeah. What is the procedure here? For example, Then the research committee of the university. yes, yes. It has a particular process, and he has been awarded supervisor from two universities, Nagpur University and Gondwana University. Process committee is there, and we have to apply for that. Prior to application given by a student, he does prior to that. So prior to that, he has to apply, and then he is Last he will be approved. Then the students, he will take students. Yes, 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 yes. ये एक जो यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की है जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है International conference and national meeting. यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन University टीचर्स एसोसिएशन Teachers Association. Yes, that is an international conference. Organization. दे आर ऑर्गेनाइजर Yeah. Yes, actually, most of your colleagues complain that students fail in English. Yes, That that's a will problem. be part 1, BA1, BS1. Yes, yes. Whether you have some other I- ideas to improve the percentage for that subject? Yes, In part 1. for that. It is around 20, we have observed it is around 20. Yes. English, 8 members should have some plan. It is improved, automatically the result will be improved. But even then, there are less numbers of students in spoken English class also. Because of the time problem, the students they do not come early. We run that class at 11 o'clock, 11 to 12. Especially for the students who are weak in English. Other reason is that 90% students are from rural area. Only 10% admissions are from Washington city. And rural area copy centers are there. Naturally, they are weak in English and they are admitted in our college. So we have to take extra labor, extra work for improving the result. And extra tests are also conducted by the department to improve the result. What is the cause of weakness in English? What is the cause of massive weakness of the student weakness in English by Copy centers from the rural areas. They are admitted. They copy in the examination. They pass. They are having 60% or above that. Even then they fail English. That's a problem. And we run with discipline. Our college is having that discipline. Strictly it is prohibited. And that's why in first year dropout is big one. but spoken English classes cannot help in giving you right. No, along with that, we also also writing skill of the students. You have to give special mentoring to the students. Bring the answer to me, show me the answer, and this is the model answer you should write. By this way, you should point out the mistakes they have tell committed. them to Ask, what is the graduation level? Total number of English papers? 500, 600, 700, 800. for graduation. Yes. Graduation 500 per year. And total it is 1500 for the degree. Those who come for master degree in English, they have cleared 1500 marks. No, not that. It is overall, and there is no particular criteria for admission in PG. There is no restriction for the students or mark limitation. They should have one Anybody can. Even yes, anybody can. Recently, university has changed the rule, and even science student, even arts student, even commerce students can also take admission in English, PG English. मल्टीडिसिप्लिनरी एनहांसमेंट जो चल रहा है
हमारे डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है। आप गिने अकेले हूँ। ये पिछले लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स में जो शॉर्ट कोर्स और कॉन्फ्रेंस के उसका चार्ट है। रिजल्ट जो है प्रीवियस 5 इयर्स का हिस्ट्री डिपार्टमेंट का BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, इसमें स्ट्रेंथ, परसेंटेज और एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे उसमें पास कितने थे उसका फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर। मेरा एक भी प्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पे नहीं था। ये रैंक में 3 प्रेजेंटेशन हुए हैं स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे एक था, ये इसमें 7 हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे 0 था, इस बार 5 हुए। कहाँ गए आप? इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल जो सारे चीजें तो ऐसे हो गया। मतलब क्या है? जब तक आप आ रहे जाओ चाहे पाकिस्तान जाओ कोई बात नहीं। क्यों क्यों इसलिए इसको इंप्रेशन क्या चीज है आपने जोड़ा है इसमें? इस साल म्यूजियम जुड़ा है और कुछ स्टोन्स मैंने कैसा ऐसा हिस्ट्री बोले तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है कहीं ना कहीं। अपन उसके डीप में जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जैसे बालाजी मंदिर है, उसके लिए आज उसका हिस्ट्री अपन देखा जाए तो उसमें आज कोर्ट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर साइंस सॉरी how many classes you take per day? पर डे 3 क्लासेस। 3 classes. Total age is how many? 18. Or it's 16 or 18? 16 or 18? 18 classes. उसमें हो जाता है सारे पाठ खत्म हो जाता है। जितना कोर्सेज ऑफ स्टडीज हो जाता है। Total it will be around do justice within this 8 number of classes for all students. 10 periods I think, no? No, only 1 class. It is optional subject, na? Even though for part 3 there will be to generally. Generally also, but in Amravati University, only 1 faculty final year. What is the full mark of history subject? I mean, a person opts for history for year 300. No, per year 100 marks. Only for 100 marks. It is optional subjects. Oh, It is optional subject in arts, mathematics, chemistry, bio, and computer science. These are the subjects of science. BCA is a faculty, Bachelor of Computer Application. In a BCA, all the papers are related to the computers, like engineering. The combination of mathematics, chemistry. No. BCA is a separate course. only computer पढ़ा रहे हैं. Only computer. जितने सारे पेपर्स हैं सारे कंप्यूटर Computer. Yes. ठीक है सुन लीजिए. How many licensed software users? No sir, it is single. उसको है क्या? Actually, in lab, I use a Pirated software. I use a Pirated software for Pirated for students. It is not possible for purchasing. आगे चलिए. How many faculty are there in your department? Yes, sir. How many teachers? Faculty members. These are the list of faculty. Right. Permanently, all permanent? It is for the students. Here about 11,000 per year per student. Per year. Total. Per year per student. So they will be paying 11,000 some odd for every year for 3 years. Every year. That will be 33,000 something. Right. Actually, before 2-3 years, scholarships. These are the list of my department. Equipments of the computer lab. The first is the computers. 44 nodes systems have been available. Laser printer, projector, and some other equipments of that department. Then this is the structure of computer lab. Then the student enrollment of the last 5 years. In session 11-12, 78 students have been enrolled. Then in session 12-13, 14 up to 16-17, these are the list of students. 11-12, the number of students have been admitted in the first year 78, pass has been 23. Last one. Final year, last year. नहीं, My subjects. this is you are telling this is with English, no? Yeah. Exclude that one. Excluding that one, progression of students in newer subject in computer, because this course is BCA, no?
For the timing, forget about that English. This result for BC only. No, it is not 22%, sir. From 27, 22 students have been passed. It is near about 85%. Results are good. They have to देखा है BCA 1 कारण क्या हो सकता है? There is one reason, sir. बच्चे नहीं करते बच्चे। नहीं, बच्चे पढ़ाई करते हैं सर। इसका एक रीजन है कि up to 12 इनको जो सब्जेक्ट्स and in BCA all the subjects are related to the computer science. There is no basic. That's why the result has been. म्हणजे फर्स्ट इयरला तर ड्रॉपआउट रेशो आहे सर तो याच्यामुळे जास्त आहे की 27 student 28 student have been passed. It is near about 80%. Then in session 13-14 43 student have been enrolled. Then from that 43 18 student have been passed. It is near about 85. Then after that in 15-16 20 student have been admitted. From that 20 student only 3 students have been passed. There is one reason. And in first year from 70 nothing. अच्छा मुझे बताइए सेमेस्टर 1 जो है हाँ इसमें एंट्री होती है हाँ सेमेस्टर 2 में एंट्री नहीं होती होती है सेमेस्टर 2 में डायरेक्ट एडमिशन नो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज एडमिटेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर बच्चा है हाँ आपके यहाँ पर कैरी ऑन सिस्टम नहीं है कैरी ऑन है ना तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि कैसे होगा पर मुझे ना ये कैसा है सर? ऐसा मतलब ये ड्रॉप आउट भी काफी ज्यादा है ड्रॉप का रीजन ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से आगे ड्रॉप आउट के बारे में या पास इज इक्वल टू बी यू आर टेलिंग दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस in my last slide the number of students has been placed. Hajit Kaur Bhatia is a third merit in the leadership. This is the achievement of my department. Then the student organized some programs. सेमिनार होता है मेरे ख्याल में स्टूडेंट सेमिनार ऐसा ऐसा है स्टूडेंट्स एक्चुअली एसोसिएशन इज अ बैड वर्ड पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हां गुड रिसर्च पार्टी होता है रिसर्च डिपार्टमेंटल 15 Yeah. 2 years. Yes, 2 years back. I am a regular. Other side. CAG. 2% are there. Management. Just factors. Right. Next. Students also pay. Government is. This is only for which type of. This is not self-finance. No. CBBT like that. Okay, physics, chemistry, mathematics, physics, chemistry, electronics, just like course paper computer science can be opted. 1 hours. 45 minutes. 45 minutes. Your class 45 minutes. 45. So you are taking less control. Yeah. नहीं control कितना नहीं है 21. 18 चाहिए 21 है. 18 चाहिए 1 hour calculate. 1 hour स्टूडेंट calculate. ही है ना हाँ, for a 1 hour. क्योंकि पीरियड जो है 45 मिनट लगाए तो 15 आवर बनते हैं हाँ. As far as arts it is 60 and for science it is 20 usually as per UGC norms. क्या इनको 20 घंटे बनाना चाहिए Okay. Right. हाँ. तो सोना चाहिए ना चलो कोई बात नहीं चलो आगे So these are the students admitted for BSc computer. Then department is having those equipments. 21 computers are there. No, sir. This is the separate lab of computers. Yeah, different. Different lab is there. Different lab is there. Different lab, different all equipments. Classes are the lab class. Lab starts at the 10:19 a.m. But we before that we conduct at the 9:30 a.m. each day. We conduct this workload also. Exam portal so that we can demonstrate the students how live examinations can be faced, and the portal name is netslateGo.com.
and these are working both for UG and as well as teachers. There are non-teaching staffs, 4, 1 lab assistant and 3 lab attendant. About the combination next for suppose there is science subject, what is the combination? Yes, Dr. Bhagat has completed his minors project on the 3 people 5 megahertz, which is a very important range, and we can use this particular NCR meter for analyzing 15 parameters, and which are important for dielectric properties. Likewise, AC conductivity, we can use this spectrophotometer, which is very important, and Dr. Bhagat has worked on this particular instrument. Whether these are common to physics and chemistry or only for physics? Optical property, Spectrophotometer is related. I think it's common for. Sir, more sophisticated one were kept in central lab, so they can take any faculty can take the benefit, and some regular instrumentation to LED lamp and CFL. We find out such type of difference that 135 per month. Yeah. 135 per month and is on a regular basis. He is working as Teacher Association होता and HGB UMPM means Sant Gandigoga Amravati University Mathematician Teacher Association is a lifetime members. Learning resources of department has a library, also the provide the question papers and syllabus and e-books. Teaching methods use the acetic acid departmental map. It is the short-term courses and the long-term courses, because with the research works, organize the national seminar, workshop, conference, increase the research work through the reputed journals, write textbook and earlier now, till up to the 2017, in my sickness year, we got the staff. This was staff of botany, non-teaching staff, department of botany, area of department, museum is both are here. The result analysis of this first same first, the ratio of passing percentage at total 33. In 2009. Semester. Examination is based on the semester wise. Fourth semester, this is second year. So these are some objectives of our department to create the subject interest among the students. Yeah. Okay. Organize. Yes, regular 4 faculties. Sir. We are the CLP, UG and the PG. So the students' strength is gradually increasing from the 2011 to the 2016 and the 17 in the UG and the PG also, sir. About the 90 for the UG 11 to the 2016 and the 17. Action and international cooperation for the ESL lunar crater, sir. Ecology to save this lunar crater. Almost 50,000 years back. 50,000 years back. Oh. How could you do that? It is calculated 50,000 year back. It is popularized by Ramsar Convention. It is the convention held in Iran at the Ramsar site. Now, in the wake of Government of India, we are running a campaign of various claims driving their presenting paper everywhere. Lunar Lake wetland that should be get conserved. Comprehensive efforts of the conservation of lunar should be taken. Our department has 11 teaching staff members and 5 non-teaching staff. Teaching for graduation and 3 block hour basis for undergraduate. About non-teaching staff, we have 1 lab assistant permanent, 3 lab attendants and 1 attendant for food division. We have 3 laboratories, 1 storeroom, 1 instrument room and 1 weighing or balance board. Now about staff profile. Sir, out of these
faculties. These rate having 33 and 28 years experience unfortunately expired in last year. So in our department at present now,